Welcome all. I am Ketki Panke, student of BSc Honours Agriculture 4th year from College of Agriculture Rewa. My topic is mode of pollination. In this slide, we will discuss some points about pollination, its definition, importance of pollination, mode of pollination, agents of cross-pollination, mechanism promoting self-pollination and mechanism promoting cross-pollination. Pollination. Pollination is act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. पॉलिनेशन एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्लावर के मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा पे. नाउ इन दिस पिक्चर पॉलिनेशन प्रोसेस अकर्स. Importance of pollination. First importance is reproduce and produce enough seed for dispersal and propagation. हमें enough quantity में seed produce करना है propagation के लिए and dispersal के लिए. Second importance is maintain genetic diversity within a population. Population में genetic diversity को maintain करने के लिए. And third importance is develop adequate fruit to entire seed dispersal. Mode of pollination. Basically, there are three types of pollination: self-pollination, cross-pollination, and often cross-pollination. What is self-pollination? The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of same flower in the same plant or to the different plant which is genetically similar is called as self-pollination. Examples of self-pollination are wheat, राइस एंड टमेटो. सेल्फ पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे. टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन: ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी. Autogamy. In this type of cell pollination, the pollen is transferred from the anther of one flower to the stigma of the same flower. Autogamy के लिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए. ये एक टाइप होता है सेल्फ पॉलिनेशन का जहाँ पे पोलन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पे सेम फ्लावर के. गिटनोगेमी. इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन द एंथर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट. Mechanism promoting self-pollination. First is bisexuality. Male and female sexual organs present in the same flower. Examples are wheat, rice, groundnut. Bisexuality क्या होता है? फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए. सेकेंड इज होमोगेमी. मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम. एग्जाम्पल wheat, groundnut, etc. होमोगेमी में मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन सेम टाइम पर ही मैच्योर होते हैं. थर्ड इज क्लिस्टोगेमी. इन दिस कंडीशन फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल एंड इंश्योर्स कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्लावर्स ओपन नहीं होते और सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है. एग्जाम्पल्स ओट, बार्ले, वीट, ग्रासेस एक्सेट्रा. एंड लास्ट वन इज चास्मोगेमी. In some species, flowers open, but only after pollination has taken place. Examples are barley, wheat, oat, and many cereals. Now, what is cross-pollination? Cross-pollination is a natural method in which transfer of pollen takes place from anther of one flower of one plant to the stigma of flower of another plant of a same species. For example, emasculation, removing the male part from the anther. क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट के एंथर के पोलन ग्रेन से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर, इफ पॉलिनेशन इज डन बाय विंड, इट इज कॉल्ड एज एनीमोफिली. And if pollination is done by water, it is called as hydrophily. Biotic factors, if pollination is done by snails, it is called as malcophily. If pollination is done by insect, it is called as entomophily. If pollination is done by birds, it is called as ornithophily. If pollination is done by bat, it is called as cleropterophily. And by other vertebrates, it is called as zoophily. Mechanism of promoting cross pollination. First is diclinky
or unisexuality. It is a condition in which flower is either staminate or pistillate. डायक्लिंकी में क्या होता है, फ्लावर में या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल. It includes monoacy and dioacy. Monoacy, staminate and pistillate flowers occur in the same plant, either in the same inflorescence, example mango, banana, coconut, or in separate inflorescence, example maize, cucurbits, strawberry, etc. Dioacy. The male and female flowers are present on different plant, that is, in such species are male or female, that is, examples papaya, date palm, etc. Second is dichogamy. Anther and stigma of hermaphrodite flowers matures at different time, facilitating cross pollination. Dichogamy में एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे. It includes protogyny and protoandry. Protogyny, gynoecium matures early than androecium, example bajra. And in protoandry, androecium matures earlier than gynoecium, example marigold, maize, cotton, etc. Protogyny में gynoecium यानी फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा मेल से, एंड इन प्रोटोएंड्री मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा फीमेल से. Third is heterostyle. Different length of style and filament, example linseed. And hercogamy, presence of physical barrier or mechanical obstacles between the anther and stigma ensures cross-pollination. Seventh is self-incompatibility. It refers to the failure of pollen from a flower to fertilize the same flower or other flower on the same plant. It may be saprophytic or gametophytic. Examples are mustard, tobacco, sunflower, and radish. And eighth is male sterility. It refers to the absence of function pollen grains in a hermaphrodite flower. मेल स्टेरिलिटी में जो पोलन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है. Often cross pollination. In this type of self pollinated, however, the extent of cross pollination often exceeds 5 to 50%. Such species are generally known as often cross pollination, and examples are jowar, cotton, safflower, arhar, etc. That's all. Thank you.